इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Sensex ends at fresh all-time high, surges 847 points, and Nifty closes near 21,900. Retail inflation increases marginally to 5.69% in December, remains under RBI's tolerance band. And Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has transformed the lives of the people in the country, says Union Minister Hardeep Singh Puri. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, सेंसेक्स अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा, 847 अंक कुचला। निफ्टी 21,900 के नजदीक बंद हुआ। दिसंबर महीने में देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर मामूली तौर पर बढ़ी, 5.69% पर पहुंची, लेकिन अब भी यह आरबीआई के दायरे के अंदर है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बदला। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला लगातार चौथे सत्र में आज भी तेज रहा और प्रमुख सूचकांक अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर बंद हुए। आईटी सेक्टर की अगुवाई में निवेशकों ने लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी खरीदारी की। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 847 अंक यानी 1.2% की बढ़त लेकर 72,568 के सर्वोच्च शिखर पर बंद हुए। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 247 अंक यानी 1.1% उछाल के साथ 21,894 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.36% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.41% की वृद्धि हुई। Key domestic stock market indices sustained their upward trajectory on the fourth consecutive day, reaching new record highs today. The surge in the benchmark indices was predominantly driven by robust performance of the IT stock sector, buoyed by better than expected quarterly earnings from sector giants Infosys and TCS. Sensex rose by 847 points, or 1.2%, to end at a fresh all-time high of 72,568. Nifty also gained 247 points, or 1.1%, closing at 21,894. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index gained 0.36% and the small-cap index rose 0.41%.
In the Sensex pack of 30 companies, shares of 19 appreciated, while those of 11 companies declined. Infosys surged to 7.8%, Tech Mahindra gained 4.7%, and TCS rose 3.9%. On the other side, Bajaj Financial Services declined 1.1%, Power Grid and Ultratech Cement both slipped 1%. HDFC Bank fell 0.6%. In the sectoral indices, 16 sectors gained while 4 declined. IT surged 5.1%. Tech gained 4.4% and Realty rose 1.9%. On the other side, healthcare fell 0.5% and utilities lost 0.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,066 companies appreciated, while those of 1,787 companies declined. A total of 89 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 82 रुपए 92 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक मजबूती के साथ 102.37 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में लगातार 4 सत्रों से हम तेजी देख रहे हैं। आज भी अच्छी खासी तेजी हमने देखी। बाजार में आज के कारोबार पर किन अर्थों में ले रहे हैं आपको? मनोज जी, देखिए, वैसे तो बाजार में अगर हम देखें तो एक बिल्कुल ही महोत्सव का माहौल है, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हैं। और ना सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों में हम देखते हैं, ब्रॉड बेस्ड मिड कैप, स्मॉल कैप, करीब करीब सभी जो श्रेणी के आप कह सकते हैं शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उसमें सभी में हम तेज़ी देख रहे हैं, जिसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। तो क्लियरली मुझे लगता है कि एक भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मजबूत स्थिति है उसको ये दर्शा रहा है। और यदि हम देखें तो आज जो दुनिया के सबसे बड़े 4 बाजार हैं भारतीय बाजारों की, शेयर मार्केट की, उसमें गिनती होती है। इससे ये पता चलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो एक ग्लोबल स्टेटस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो काफ़ी उनकी पार्टिसिपेशन बहुत है, काफ़ी बड़े पैमाने पे उन्होंने पैसा भारतीय बाज़ारों में लगाया है पिछले दिनों। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव माहौल है मार्केट के लिए। लेकिन इसके साथ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जिन्होंने जो अच्छा मुनाफा जिनको मिल रहा है बाज़ारों में, कुछ साथ में वो अगर प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, कॉशियस रहें, तो ये बेहतर होगा। कई बार ऐसा हमने देखा है कि ऐसी बहुत बड़ी तेज़ियाँ होती हैं और उसके बाद अचानक बाज़ारों में गिरावट आती है, क्योंकि करेक्शन भी एक बाज़ार का एक ज़रूरी हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशंस अभी हैं उनके चलते हम कभी भी करेक्शन देख सकते हैं, शार्प करेक्शन देख सकते हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग करना, थोड़ा कॉशियस रहना, वो भी एक अच्छी नीति होगी ऐसे बाज़ारों में, क्योंकि बहुत यूफोरिया बहुत है। हर निवेशक को लग रहा है पैसा बनाना बहुत आसान है, और ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं ये कॉशियस नोट कर रहा हूँ। श्रोताओं, पुनीत जी जब कभी हमारे साथ होते हैं तो लगातार आपको अच्छी सलाह देते हैं और इनका नज़रिया लगातार उठते बाजार के बारे में स्पष्ट रहा था। लेकिन आज पुनीत जी कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करते रहें, तो आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं, उसमें आपकी लाभप्रदता अपने सर्वोच्च स्तर पर बनी रहे, इसलिए थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली करते रहें। Puneet, today in fact the DIIs were the net buyers to the tune of 2,911 crore rupees. Bellwether stocks like TCS and Infosys announcing earnings which are better than expected. How is the market actually thinking right now? Is it just on the basis of FIIs buying into the market? Till when will they continue? What is the timeline to the elections? Give us some perspective here. So Arjun, the important thing to understand is that the huge boom in the markets that we are seeing right now is, of course, it reflects to some extent the fundamentals of the economy, but also we see a huge amount of inflow of funds into the stock market from domestic investors as well as foreign investors. If you look at the size of the mutual fund corpus now, it is exceeding 50 lakh crore rupees. So almost 50 lakh crore rupees of public money is now being managed through mutual funds for the stock market. This amount used to be hardly 1/3 just 4-5 years back, and it has gone up by 3-4 times in last 2-3 years. So you can imagine, and the number of people who are participating in the market directly, or which we usually measure by the number of folios in DMAT, used to be about 2.5-3 crores. It has crossed 10 crore number now. So 10 crore people are now holding DMAT accounts in the country. So it tells you the kind of huge expansion in retail participation which has happened, and it is driving money towards stock markets. Now,
it is good, I think, in the long term, but in the short term, it can create bubbles, as you all know, that short-term surge in liquidity can lead to overvaluations. So when you say this, I would say it's all very good, sounds nice, good for India in the long term. Our market capitalization is now exceeding $4 trillion, among the top 4 in the world. But at the same time, for long-term players, it will be prudent, like I said earlier, to be a bit cautious and to take some money off the table. Don't get carried away by this euphoric sentiment in the market. Well, we'll continue this discussion on the stock market performance with our expert Shri Puneet Jain. But before that, we'll take a short break. So please stay tuned on Market Mantra. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about stock market performance with our expert Puneet Jain, and about caution to be exercised while also taking advantage of the booming markets, booking your profits as well. When we talk about fundamentals, because price movements is a technical analysis, but fundamentally, what would you advise a small investor? Should they be looking at the price to earnings ratio, the PE multiple, to just assess asset valuation? So price earning multiple is a long tested metric to look at valuations. But right now, if you really look at companies, many growth companies have very high PE multiples. In fact, the multiples may be running into hundreds. And usually I'm cautious about such companies. But some of these companies which came as startups, and they were innovative companies, they did command high PE multiples. So right now I would say that it is difficult to look at overall market PE multiple. In fact, if you look at the PE multiple in India, which is about 22 times of forward earnings, 1 year forward earnings, which is second highest in the world after Dow Jones. So I mean, that kind of gives you where we stand vis-a-vis the other countries in the world. So clearly, PE multiple is a good measure to look at, but right now it is in, again, I would say it is in overbought zone. It is overstretched. I think it will be a good thing for investors to look at dividend payouts. So what is the kind of yields they are getting on dividends? And if the yields are about 3%, 4%, then it is okay. But if the yields are less than 3-4%, then I would say that stocks are somewhat overvalued. What is the F&O market telling you for the weekly expiry and the monthly expiry right now to understand the technical movement of prices? Because ultimately that is what motivating your day trader and your short-term investor. So Arjun, what has actually happened? So raised a very important point, and unfortunately this the duration we have is very small to discuss this. But the truth is that the volumes of F&O market have gone up so much in India. They far outstrip the volume of the cash market, and it is almost the case of the tail wagging the dog, because the F&O market is now determining where the cash market goes, first of all. Secondly, it has so happened that now we have a expiry of some index or the other almost every day. So beginning Monday to Friday, there is some expiry or the other every day, I mean every week. So earlier we used to have only one expiry once a month, then we had weekly expiries, and now we have daily expiry of some index or the other. So amount of speculative activity in the market has gone up a lot. F&O market is telling us that the volumes in F&O market is exceeding 5 lakh, 6 lakh crores a day now, which is really huge. So I would say that again F&O market is saying that look, there is extreme participation by retail investors, and time to be cautious. I mean, that will be another flag. पुनीत जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यानी आम श्रोताओं के नज़रिए से समझना चाहूँगा कि F&O सेगमेंट में जाना जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए मनोज जी, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, और मुझे काफ़ी 25-30 वर्षों का अनुभव है इस बाज़ार को हर प्रकार से देखने का, एज इन्वेस्टर्स, एज बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे उनको क्लोज सर्कल्स मैंने देखा है। जो रिटेल निवेशक है वो F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, जो स्पेकुलेटिव मार्केट का, देखिए स्टॉक मार्केट में वैसे ही इनहेरेंट रिस्क है, F&O मार्केट में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब मेरे अनुभव में 90% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में पैसा खोते हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं कि देखिए ये तो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए काम है, उस रिटेल इन्वेस्टर का काम नहीं है। मैं बिल्कुल
सख्ती से मना करना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि भाई आप बिल्कुल पार्टिसिपेट मत कीजिए। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जब से कंप्यूटराइज ट्रेडिंग का आगमन हुआ है, जिसको हम एल्गोरिदम ट्रेडिंग कहते हैं मार्केट्स के अंदर, रिटेल निवेशक के लिए पैसा बनाना और मुश्किल हो गया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है वो इसकी तरफ कम से कम ध्यान दें, कोई एडवाइस ऐसी ना माने और निवेश पे ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें, वहाँ उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। F&O में मेरे अनुभव में 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। Well, let's have some look at macroeconomic news now with stock markets reigning market mantra. Retail inflation based on consumer price index inched up marginally to 5.69% in December 2023, mainly on account of higher food prices, but stayed within the RBI's target range for a fourth consecutive month. Retail inflation was at 5.55% in November 2023 and 5.72% in December 2022. As per the data released by the NSO, the retail inflation in the food basket was at 9.53% in December 2023, up from 8.7% in the preceding month and 4.9% in the year-ago month. RBI has been tasked by the government to ensure retail inflation remains at 4% with a margin of 2% on either side. Puneet, since the weightage of the food and drink basket is so high on CPI, how would you look at these figures at this point in time? So like you said, the CPI index is mostly skewed in favor of food and fuel, which are very volatile prices. And as we know that usually winter season is time when inflation on food prices is usually high. So we are seeing that surge in inflation right now. But if I look at the core inflation, which takes out the food and fuel inflation, then core inflation or the manufactured goods inflation continues to be under fairly good control. And my own expectation is the next couple of months we will see, as it is, I would say 5.5-6% inflation is not too bad. I think it's pretty good given the kind of GDP growth we have, which is above 7%. I think even 6% is tolerable, and going forward I think it will go down because inflation in food will be lower. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में वर्ष 2023 के नवंबर महीने में यानी पिछले नवंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन में 2.4% की वृद्धि हुई। इससे पिछले वर्ष 2022 में इसी अवधि में आईआईपी वृद्धि दर 7.6% दर्ज हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 1.2% रही। खनन क्षेत्र में 6.8% उत्पादन बढ़ा, जबकि ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि दर 5.8% दर्ज हुई है। पुनीत जी, किन अर्थों में ले हम इस आंकड़े को? देखिए मनोज जी, अगर ऑन फेस ऑफ इट हम आंकड़े देखते हैं तो लगता है कि ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है जी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर का महीना जो रहा, नवंबर दिसंबर का, थोड़ा इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पर ये स्लो डाउन था। और एक आंकड़ा इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि चाइना में जो अभी हमारे सामने आंकड़े आए हैं दिसंबर के एक्सपोर्ट्स के, 7 वर्षों में पहली बार चाइना का एक्सपोर्ट्स घटे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हुई है अबाउट 7%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एक्सपोर्ट्स में। तो एक चैलेंजिंग पीरियड ज़रूर था नवंबर दिसंबर का, और मुझे लगता है उसको देखते हुए जो 2.4% ग्रोथ है इंडिया में और ऑन हाई बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, मुझे लगता है ठीक है। और आने वाले समय में कुछ समय में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बढ़ेगी। Just citing US inflation data, that's increased to 3.4% in the year through December. What is the cascading effect on consumption globally, which is also a link to production figures? So Arjun, you know, one of the dilemmas of this modern monetary theory, MMT, is that even when we saw that inflation went up in USA and there was an increase in interest rates, the consumption never came down actually, and the US economy continues to grow quite strongly. So while inflation has ticked up slightly in USA, I think consumption remains strong and the GDP will be doing fine. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर जरूरी है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने देश में लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में सहयोग दिया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने 1 करोड़ 19 लाख घरों को मंजूरी दी और 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 79 लाख घर पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। श्री पुरी ने कहा कि पिछली सरकार में 2004 से 2014 तक केवल 13 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे और 8 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के इरादे से 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। और आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां जापान को छोड़कर अन्य प्रमुख सभी बाजारों में आज बिकवाली तेज देखने को मिली। निवेशकों द्वारा की गई खरीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.5% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की गिरावट हुई। हांगकांग का हिंग सेंग 0.4% नीचे आ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की गिरावट हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख बाजार लाभ के साथ चल रहे थे। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.8% ऊपर था। जर्मनी के डेक्स में 0.9% की तेजी थी और फ्रांस का CAC 40 1.1% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। Puneet, your views on London FTSE 100, which is now trading 0.8% up. It is not a great figure in terms of booming market data that we're seeing in India, where 847 points was a rise seen in the Sensex today with DII participation. What's happening in the UK? Because they have been struck by high inflation and some policy paralysis after Brexit. How would you rate the UK economy right now and what they're doing in the Middle East also? So Arjun, if you really break up the world into 4-5 zones of economic activity, which is US is one, European Union is another, then you have Asian and Asia excluding China and then China. So clearly it is the Chinese economy which is not doing too well and the European economy which is not doing well. The US economy and the Asian economies, particularly Indian economy, they seem to be doing very well. So clearly European markets are lagging because investors do not want to diversify into European markets. If you see, in fact, the Japanese market has broken, and very few people are noticing this. After almost a 35-year gap, the Japanese markets have broken into a new high, and they're developing very well. They're coming up very fast, and a lot of capital is being diverted from European markets and the Chinese market to Japanese markets. So clearly the investors are being prudent. They're picking and choosing where the economic growth is coming from, and Japan, India and South Asian region and USA seem to be the preferred destination and not Europe right now. Since you mentioned Japan and it's part of the Asian market story, the debt to GDP is quite high, which is why you've seen low growth in a highly industrialized nation like Japan. Do you feel that other Asian nations like India is also following that? No, I'll tell you, the great difference which people miss here is that a Japanese debt is mostly yen debt. See, this is a debt they have created in their own currency because they have a large GDP growth and per capita income. So while Japan has very high debt, it is mostly in their own currency, not in foreign exchange. In most countries which have done very badly are countries which have foreign debt. So that's why Japan has never felt any problems. Well, let's have a look at the US market now. Key US stock market indices closed on a lower note yesterday due to reports of inflation exceeding expectations and indications of a robust labor market, diminishing prospects of early interest rate cuts by the Fed Reserve this year. However, a decline in treasury yields mitigated the extent of the losses. Nasdaq Composite Index and the S&P 500 both declined 0.1%, and the Dow Jones Industrial Average ended flat. How important are debt market yields, treasury yields to the US economy, especially after the banking crisis we saw earlier, where long-term yield instruments were not seen very productive. In fact, short-term were, and that was a miscalculation of those who bought into these debt instruments. So Arjun, like you said,
the bond yields in USA is everything. I mean, in fact, the equity markets depend very largely on the signals which emanate from the bond market. What we saw in March this year, or last year rather, was that the bond yields went up to 5%, 10-year bond yield, and therefore the stock markets crashed in USA. Those bond yields eventually came down to 3.5%. Right now they are about 4%. 4% is what market is comfortable with, and we can see the growth coming. But if yields go higher than 4%, I think again equity markets will under pressure, because money will shift from equity markets to bonds and fixed income instruments. So yields are the most important factor to watch if you're looking at a stock market in USA. Let's have a look at the crude oil market. In intraday trade, Brent crude was trading at $1.40 higher at $77.87 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading 1.44% higher at $72.40 per barrel when reports last came in. What's happening in the Red Sea by the Houthi rebels? How concerned should global oil consumption be with prices, with maritime trade and commerce now being rerouted? So Arjun, if you really see the reaction of the oil market, it's not extremely concerned. It is a matter of slight concern. We have seen some disruption, but I think it will not have a large bearing on the situational supply of oil from Middle East. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध के लिए सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 592 रुपए बढ़त के साथ 62,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध के लिए चांदी भी मजबूती के साथ 782 रुपए बढ़त के साथ 72,136 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य मजबूती के साथ $2,050 और 10 सेंट प्रति औंस पर था। चांदी मजबूती के साथ ही $23.19 प्रति औंस पर थी। पुरीत जी, यहाँ पर सोने की जो चमक है हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सोने के लिए क्या आसार है। बहुत संक्षिप्त चर्चा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर US डॉलर इंडेक्स और नीचे आता है तो सोने की कीमतें और बढ़ सकती है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headline. Sensex ends at a fresh all-time high, surges 847 points. Nifty closes near 21,900. Retail inflation increases marginally to 5.69% in December, remains under RBI's tolerance band. And Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has transformed the lives of the people in the country, says Union Minister Hardeep Singh Puri. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह शहनशाह चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Market Mantra